Next. Hey, hello students. The next time देखिला nuclear physics रो first class देखिला. आज देखा the nuclear physics. आमें देखिला next class. That is the what is the nucleus? That is the representation of the nucleus and the constituent particles of the nucleus. Then the instability condition of the nucleus. आज देखिवा different types of nucleus. Types of nuclei. Types of nuclei. Types of nuclei. So what are the different types of nuclei? The different types of nuclei. The first isobar. Isotopes. Isotopes. The first one is the isotope. Clear? So isotopes कहा कहवा? The nucleus, but nuclei having different mass number but same atomic number. है These are the isotopes है the nuclei having same atomic numbers but having same atomic numbers but different mass number. But different mass numbers. Clear? The nuclei having same atomic number but different mass numbers. Clear? जो एटम गुड़िकर जो न्यूक्लिय गुड़िकर mass same atomic number थिबो but different mass number, that type of nuclei are called isotopes. Clear? तो साधारणतः जब देखियो एग्जांपल in case of a hydrogen, so this is H11, H12, H13. This is the mass number, atomic number 1, atomic number 1, atomic number 1. In all the three cases, the atomic numbers are same but different mass number. This is the mass number 1, the mass number 2, mass number 3. Different mass number. So this is called, H11, H12, H13 isotopes. Isotopes of hydrogen. Hydrogen. Clear? So this is the isotopes. सही बड़ी भाव रे जो न्यूक्लिय गुड़िकर मास नंबर अलग अलग थिबो बट सेम एटॉमिक नंबर समान थिबो आउ डिफरेंट मास नंबर ताको हमें कोन कहबा आइसोटॉप्स बोली कहबा हला द साधारणतः टीन has maximum number of isotopes. Tin has maximum number of isotopes. Tin has maximum number of isotopes. Clear? है ताले सबुठु 10 लो अधिक maximum number isotopes एवं केते सेटा 10 ताले 10 लो केतेटा से 10 टा isotopes. Clear? तो नेक्स्ट टाइम देखिबा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ isotopes. जेहेतु isotopes रा कोन अछि atomic number समान, that means number of protons are same but different mass number different means that is the neutron संख्या अलग अलग. तेणु जेहेतु different mass the same atomic number ताले हम देखिबा the characteristics of isotopes. जेहेतु same atomic number तेणु they are in same place in periodic table. They are first they are in same place in periodic table. ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି
द पीरियडिक टेबल कहाँ पर डिपेंड, दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन कहाँ पर, प्रोटॉन। तेणु जेहेतु आइसोटोप रो एटॉमिक नंबर समान तेणु दे आर इन सेम प्लेस इन पीरियडिक टेबल, अर्थात हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर इन द हाइड्रोजन प्लेस, कार्बन आइसोटोप्स आर इन द कार्बन प्लेस। सेकेंड है जेहेतु दे आर इन सेम प्लेस इन पीरियडिक टेबल, अर्थात जेहेतु हाइड्रोजन आइसोटोप्स इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन तेणु ये कौन हम, दे हैव सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे have same chemical properties, they have same chemical properties, clear, they have same chemical properties है। थर्ड, तो थर्ड देखिए they have different, जेहेतु they are different number of neutrons तो they have different physical properties, clear, जेहेतु they have same atomic number so they are the same elements, so chemical properties are same but they have different physical properties, clear। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा आइसोबार, तो आइसोटोप पहले हम देखिबा आइसोबार, another type of nuclei that is known as the isobar। तो आइसोबार क्या कहबा, that is the nuclei having different mass, different atomic number but same mass number, तो कहते हैं आइसोबार, आइसोबार है। the nuclei having different atomic number but same mass number है। तो ये प्रकार न्यूक्लिय गुड़ी को आम कौन कहबा, आइसोबार कहबा। द न्यूक्लिय हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट उल्टा से सेम एटॉमिक नंबर, एटा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, से सेम मास सेम एटॉमिक नंबर, एटी है सेम मास नंबर है। द न्यूक्लिय हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो कौन कहबा, आइसोबार। फॉर एन एग्जांपल आम जब देखा तो H13 and H23 देखो एटॉमिक नंबर सब कही इन द केमिकल इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तले थिला Z ऊपर थिला A stands for mass number, A stands for atomic number, then 1 2 these have different atomic numbers but mass number Z is equal to 3, Z is equal to 3 है। तो the nuclei having different atomic number but same mass number, तो हमें कौन कहबा, आइसोबार है। तो आइसोबार है किए, तो यहाँ कौन कहबा, हाइड्रोजन, एटा ट्रिटियम, एटा किए हीलियम, तो ट्रिटियम एंड हीलियम बोथ आर आइसोबार बिकॉज दे हैव सेम mass number but different atomic number। I mean the characteristics देखिबा, characteristics देखो they have different atomic number, that means they are in a different place in periodic table, they are in different place, they are in different place in periodic table, है। जेहेतु Z is equal to 1, Z is equal to 2 है, atomic number 1, atomic number 2 and periodic table is based on atomic number, so this and this both are at a different place in periodic table। जेहेतु they are in a different place in periodic table तले कौन होगा ना, they have different chemical properties है। तले गोटे हाइड्रोजन, एटा हीलियम, तले they have both, they have
they have different physical and chemical characteristics. Physical and chemical properties. They have different chemical and physical characteristics by properties. Clear? So this is known as the isobar. The next one देखिबा some of the special type of isobar in which the number of protons and neutrons are interchanged. The such isobars but such nuclei are called mirror nuclei. Third is mirror nuclei. What do you mean by mirror nuclei? So you know mirror. The mirror means there is suppose there is a lateral inversion of mirror. अर्थात आमे यदि देखिबा तो this is known as lateral inversion mirror. तो ठीक से भाया बारे एठी हमर कोन देखा जीवो तो सेमते lateral inversion ता माने the nuclei having the protons and neutrons are interchanged. The nuclei in which the number of protons and the number of neutrons are exchanged by interchanged. साधारणतः these are the कौन कहली isobars the sum of the nuclei जहार mass number अलग अलग समान but atomic number अलग अलग किंतु एटी कौन देखा जीवो the number of protons and the number of neutrons are interchanged. तो ए प्रकार न्यूक्लियाई गुडी को हमें कौन कहबा मिरर न्यूक्लियाई बोली कहबा. क्लियर? फॉर एन एग्जांपल दे देखिबा मिरर न्यूक्लियाई दैट इज नाइट्रोजन एग्जांपल देखिबा नाइट्रोजन 713 and the carbon 613. Clear? So now we consider two nuclei, गोटाला नाइट्रोजन 713 और गोटाला कार्बन 613. देखो तो नाइट्रोजन 713 एंड कार्बन 613 तो आ भीतर देखो तो नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजन जदि हमें देखिबा कार्बन कथा देखिबा तो कार्बन रे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हला 6 and number of neutrons is 13 minus of 6 is equal to 7. तो कार्बन ले प्रोटॉन संख्या ला 6 न्यूट्रॉन संख्या ला 7 एंड नाइट्रोजन कथा देखिबा तले नाइट्रोजन ले कोन रहला तो प्रोटॉन संख्या ला 7 बट न्यूट्रॉन संख्या ला 13 minus 7 that is equal to 6. क्लियर? बर्तन देखो एठी प्रोटॉन केते अछि 7 एठी न्यूट्रॉन केते अछि 7 एवं एठी प्रोटॉन केते अछि 6 एठी न्यूट्रॉन केते अछि 6 दे आर इंटरचेंज्ड हला तेडु एठी नाइट्रोजन 713 एंड कार्बन 613 दीज आर द टू आइसोबार्स देखो 13 these are the two isobars but their protons and neutrons are interchanged. Then such a nuclei are known as the mirror nuclei. आगे में कौन कहबा mirror nuclei. तो नेक्स्ट आसला आइसोटोन. फोर्थ टाइप है आइसोटोन. तो आइसोटोन का कहबा isoton. Iso means same, tons, isotons. The nuclei having same number of neutrons. तो कमी कौन कहबा isotons. Nuclei having same number of neutrons.
सेम नंबर्स, आइसो मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ताको हमें कौन कहबा आइसोटन्स हला। तो जो जो न्यूक्लियस गुड़िकर न्यूट्रॉन संख्या समान थिबो ताको हमें कौन कहबा मिरर न्यूक्लिय बोली कहबा, सॉरी आइसोटन्स बोली कहबा। सपोज वी कंसीडर द मर्क्यूरी that is 8198 and we consider another that is the gold that is equal to 79197 देखो। तो we consider two nuclei, गोटे mercury nuclei, another is the gold nuclei। तो in this case the proton संख्या केते गेला, the number of protons Z is equal to 8 and the number of neutrons, look at number of neutrons 198 minus of 8, so that is equal to 118 हला। तो that is equal to केते गेला, the number of nucleus हला केते neutrons 118। now here एठी देखो the number of protons is equal to 79, then the number of neutrons that is equal to 197 minus 79, so this is equal to 118। so observe this, the number of neutrons 118, the number of neutrons 118, the nuclei having same number of neutrons, you know, as the mercury 198 and gold 79 and mass like atomic sorry तो mass number केतला 197 have same number of neutrons, so these two are the isotons, clear। तो next time देखिवा the last type of nuclei that is called isomers। So what is the isomer? Isomers, they have nuclei having same atomic number and same mass number हला, same atomic number and same mass number, but they have different radioactive property हला। तो these are called isomers हला, same mass atomic number and same mass number but the different radioactive properties, they are called isomers। तो एटा को पप्पू बाबा कथा ल करियो तेन से पप्पू सार को लगा ठीक है जी चलसी हला। तेन हम देखिले टाइप्स ऑफ न्यूक्लिय नहीं कि ताले हम देखिले टाइप्स ऑफ न्यूक्लिय, ताले कौन देखिले, प्रथम देखिले आइसोटॉप्स, प्रथम देखिले आइसोटॉप्स, द्वितीय हम देखिले कौन आइसोबार्स, देन तृतीय देखिले हमें मिरर न्यूक्लियाई, देन तापर हम देखिले कौन दैट इज द आइसोटन्स and the last one is that is the isomer, clear, isomers है। These are the 5 different types of nuclei। तो in this case Z is constant, Z same but A different, clear है। जहाँ हमें पढ़ेले तो आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर समान रहिबो किंतु मास नंबर अलग रहिबो। आइसोबार जस्ट रिवर्स, Z is different and A same by constant, but same कर दो constant करिया नहीं A Z same है। तले Z अला different
A hela same, that is the isomer. Then this is the mirror nuclei. The mirror nuclei कौन? These are the isobars. Mirror nuclei क्या? Isobars. then Z is equal to different, Z different एवं A कौन होगा? Same होगा, किंतु number of protons and neutrons are interchanged, है ना? The number of protons and neutrons are interchanged. Next isotons. Isotons क्या कहबा? That is है ना? तोरा number of neutrons समान होगा, है ना? The number of neutrons n is equal to same, number of neutrons same. एवं isomers, isomer रे कौन होगा? ना A constant, Z same रहिबो, Z same रहिबो, A same रहिबो, but different radioactive property, different radioactive property, है? So these are the 5 different types of nuclei. Clear? Next one देखिवा, तला में nucleus विषय जानिले, एबे देखिवा measurement of the nucleus. The nucleus is a very small in size. It is the order of 10 to the power minus 15. तले यहाँ पे हमें कोथरे measure करीबा, है ना? तो to measure the nucleus, the mass of the nucleus by subatomic particles, we use a smallest unit of mass, that is known as the atomic mass unit, है ना? Atomic mass unit. अका जाए atomic mass unit. Atomic mass unit, AMU. Atomic mass unit. It is the smallest unit of mass. Atomic mass unit. It is the smallest. जेहेतु subatomic particles, electrons, protons and neutrons are the fundamental particles. There is the last elements of the particles matter. तेणु आपको हमें कोथरे मापुचु, it is the smallest unit of mass. तो तार mass को हमें कोथरे मापिवा, the smallest unit of mass, that is the AMU. It is the smallest unit of mass. Atomic mass unit it is the smallest unit of mass. It is used to measure. It is used to measure. It is used to measure the subatomic particles. Subatomic particles. Subatomic particles. That it is a very small in size. The smallest unit of mass. This is used to measure the subatomic particles like electron, proton, neutron, etc. तो ये गुडी को हमें कोथरे मापू atomic mass unit. तो देखिए ये atomic mass unit कहते हैं, है ना? What is the magnitude of the atomic mass unit? तो atomic mass unit कहले हमें कौन बुझिबा? तो one atomic mass unit, it is equal to 1/12th part the mass of a carbon atom. It is 1/12th part of the mass of a carbon 12 अर्थात 612. Carbon has different isotopes, so we consider the general carbon atom. Clear? So one atomic mass unit is nothing but it is the 1/12th part of the mass of carbon atom. তাহলে বেড়ে क्वेश्चन আছে হেলানি 1 AMU is equal to dash. তাহলে গোটে AMU যে কেতে? তাহলে how can you find out? Now 1 AMU is equal to 1/12th mass of a carbon 12 atom. Clear? তাহলে বর্তমান দেখিবা গোটে carbon 12 হেলানি atom ro mass কেতে? তাহলে আর atomic mass কেতে আছে? তাহলে that is equal to 12. হেলা? তাহলে অর্থাৎ the 12 gram of जदि हमें कौन करिबा atomic mass को एक्सप्रेस करिबा ग्राम को दाव जे molar gram, ताले 1 mole of gram of atom contains the Avogadro's number of atoms. तेणु इनी जदि कार्बन रो atomic mass हला 12 अर्थात the 12 gram of atom, 12 gram of carbon contains how many number of atoms?
n0, that is the Avogadro's number of atom, that is equal to 6.023 into 10 to the power 23 carbon atoms. Clear? In 12 ग्राम, ताले 12 ग्राम ऑफ कार्बन रे केते एटम रहला? एतिकी कार्बन एटम. ताले गोटे अर्थात एतिकी ग्राम ऑफ एटम रो मास ला केते? 12 ग्राम. अर्थात 6.023 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम रो मास ला केते? 12 ग्राम. ताले लिख परिबा. ताले मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम है इज इक्वल टू केते ना 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम. जेहेतु 12 ग्राम ऑफ कार्बन रे 6.023 इन 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम रहला, तेणु मास ऑफ 6.023 into 10 to the 23 कार्बन एटम रो मास केते गला ना दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. हमर एटी कोन अछि? मास ऑफ हे कार्बन एटम. ताले गोटे कार्बन, ताले मास ऑफ ए कार्बन एटम. ताले गोटे कार्बन एटम मास केते जीवो? 12 डिवाइडेड बाय एटा केते गेला 6.023 into 10 to the power 23 हैला. ताले मास ऑफ ए कार्बन एटम इज इक्वल टू केते गेला 12 by 6.023 into 10 to the power 23 this much ग्राम. ताले गोटे कार्बन रो मास हलाती एबे हमें कोन करिबा 1 AMU. ताले 1 AMU atomic mass unit is the 1/12th part of carbon mass of a carbon atom. Mass of a carbon atom. ताले this is equal to 1/12th of. ताले mass of a carbon atom केते होला? एतिकी. ताले 12 divided by 6.023 into 10 to the power 23 this much of a gram. ताले एतिकी. ताले गोटे 1 atomic mass unit कहले हमें केते बुझिले 1/12 into एतिकी. This is cancel out. Clear? ताले वर्तमान एटा केते होला देखा. ताले this is equal to हला. ताले is equal to केते गेला 1/6.023 into 10 to the power 23 ग्राम. क्लियर? ताले 1 AMU. ताले गोटे AMU ला केते 6.023 into 10 to the power 23. ताले this is equal to 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम. एतिकी ग्राम. क्लियर? ताले 1 AMU केते गेला 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम. ताले जदि हम याकु SI by MKS system रे लिखिबा का all the units are expressed in SI, ताले that is equal to केते गेला 1.66 into 10 to the power -24 into 1 gram is equal to 10 to the power -3 kg. ताले this is equal to 1.66 into 10 to the power -27 kg. ताले this is 1 AMU. Clear? ताले this is the most important relation. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power -27 kg. This is the very small unit of mass. हला. ताले जदि कहा जाए what is the order of the car AMU? ताले order केते गेला 1.6 into 10 to the -27. ताले order is -27. The order of AMU is -27. Clear? ताले we measure all the mass of the carrier, the subatomic particles in AMU अर्थात atomic mass unit रे हला. ताले that is the mass of electron. जदि हम देखिबा ताले mass of electron हला. आमी mass of electron केते जानि छे? that is equal to 9.1 into 10 to the power -31 kg. अब यदि में कन्वर्ट करिबा AMU को ताले this is the result 0.00055 AMU हला. AMU ताले 0.00055 AMU. Similarly we can write the mass of proton.
ताले मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. ताले this is equal to 1.00727 u, but nearly equal to u, AMU, AMU. Then the mass of neutron, कौन कहती next previous class रे कह दिला, the neutron is slightly heavier than the proton. ताले 1.674 into 10 to the minus 27 kg. ताले this is equal to 1.00866 AMU. Clear? ताले these are the representation of the mass in atomic mass unit. हैला तो साधारणतः में न्यूक्लियर फिजिक्स रे आमे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गुडी कोथ रिप्रेजेंट करबा AMU रे हैला तले तो न्यूट्रॉन हैला 0. न्यूट्रॉन ला तो आवश्यकता नाही, ओनली हियर वी यूज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 1.00727 AMU हैला. तो अनदर वन यू रिमेंबर दैट दिस AMU एटॉमिक मास यूनिट आर अन्य नाउ यूनिफाइड यूनिट आको मध्य में कौन लिखो ओनली यू बोली लिखा जाए हैला. वी कैन यूज AMU और सिंपल यू एटॉमिक मास यूनिट बाका यूनिफाइड यूनिट वी कैन राइट सिंपल यू. क्लियर? आमे 0.00055 AMU लिख परिबो ना 0.55555 यू लिख परिबो, सेमती 1.00725 यू लिख परिबो, सेमती एटा 1.00866 यू मध्य लिखि परिबो. क्लियर? तल दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट. तल द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन क्वेश्चन आसे हला एटॉमिक मास यूनिट फिल अप द ब्लैंक्स आसीबो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आस परिबो किंबा हलाडी द शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU हला. तल 1 एटॉमिक मास यूनिट हला आर अन्य ना कोन कहली 1 U यूनिफाइड यूनिट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. This is the most important relation. तो नेक्स्ट टाइम देखिए characteristics of a nucleus. The characteristics of nucleus. Characteristics of a nucleus. Characteristics of nucleus. हैला तो फर्स्ट देखिबा न्यूक्लियस चार्ज. तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? गोटे न्यूक्लियस रा चार्ज कला में केते बुझवा हैला. तो न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट इज द सेंट्रल कोर. According to the Rutherford's alpha scattering experiment रे हमें पाइथिले न्यूक्लियस इज ए सेंट्रल कोर एंड इट कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम. क्लियर? ताले गोटे न्यूक्लियस रे केते चार्ज पॉजिटिव चार्ज ना ए न्यूक्लियस भितर कोन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तेणु बाहर जति की इलेक्ट्रॉन भितर मध्ये सति की प्रोटॉन. सपोज मो कोन रिप्रेजेंट करछि त जे कोन से न्यूक्लियस का भितर कोन लिखछ x z a. तल z means that is the number of protons हला. तल जदी गोटे न्यूक्लियस भितरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z एवं गोटे प्रोटॉन ला चार्ज कते वी रिप्रेजेंट e प्लस हला. गोटे प्रोटॉन ला चार्ज हला कते e प्लस टा किए ना दैट इज द एलिमेंटरी चार्ज जार वैल्यू होची 1.66 into 10 to the minus 19 कोलम. तेनु गोटे चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस सपोज z इज द हला atomic number of the element. आमे जो एलिमेंट रा न्यूक्लियस कथा डिस्कशन करियो जाउ छे चार्ज बारे कहयो छे त से एटम रो एटॉमिक नंबर लागते z एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हला. त जदी z हला एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट तेबे तार न्यूक्लियस रो नंबर ऑफ प्रोटॉन केते ना z इज इक्वल टू तले कोन पहिले त नंबर ऑफ protons in its nucleus. In its माने सही एलिमेंट रो in its nucleus. क्लियर? तले जो एलिमेंट कथा में नै छे से एलिमेंट रो न्यूक्लियस रे केतेडा प्रोटॉन रहला ना z. त जदी गोटे प्रोटॉन ला चार्ज हला e प्लस तेनो व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस तलते the charge of a nucleus is equal to तले केते गला. यस त
ताले z into हला नंबर ऑफ z बा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into the charge of a proton, charge of a proton केते ना z plus, ताले that is equal to plus ze. Clear? ताले this is the charge of a nucleus. ताले गोटे न्यूक्लियस रा चार्ज केते ना जते की नंबर ऑफ प्रोटॉन थिबा सेते की into e. E means that is the ताले कोन लिख परिबा, ताले we can write 1.66 into 10 to the power minus 19 into z coulomb. ताले this is the charge of a nucleus. Clear? Next time देखिबा size हला, ताले what is the size of nucleus? The size, second characteristics है size. So what about the size of the nucleus? है the nucleus कौन कहै the nucleus कौन? It is a central core. The second है size. So what about the size of the nucleus? The nucleus is a central core of कहारो ना atom. गोटे atom रा central core टा होची किए, that is the nucleus. है तो its size है depends upon कहाँ परे ना the radius. The radius of the nucleus. The radius of the nucleus r is equal to r0 into a to the power 1 by 3. ताले radius of the nucleus कहते हैं r is equal to r0 into a to the power n 1 by 3. What is a? That is the mass number. A है mass number of the nucleus. ताले जो न्यूक्लियस रा में साइज बाहर करे जाउचे से न्यूक्लियस रा मास नंबर केते गेला a. Then r0 कोन ना इट इज ए कांस्टेंट हला r0 हला इट इज ए कांस्टेंट जार वैल्यू हला 1.2 Fermi हला 1.2 Fermi. What is the Fermi? The Fermi is nothing but it is 1.2 Fermi means femtometer, that means 10 to the power minus 15 meter. तर सेट पे कहितला the order of the कहरो the size of nucleus thus order कते 10 to the power minus 15 हला एडला 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. तण हमें कहि परिबा the order एटी order कते ना minus 15. जदि कहा जाए what is the order of the size of nucleus ना it is 10 to it is a minus 15. Clear? तले हमें एटी कोन देखिले तले गोटे न्यूक्लियस रा साइज it depends upon the radius and this radius is equal to r0 into a to the power 1 by 3, where r0 is a constant, that is 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Clear? तले बर्तन देखो तले r तले depends on, if this is a constant तले r depends on a to the power 1 by 3. This is the most important relation जोटा कि एटा तोरा काउंसिल रे multiple choice question लासे हैला in which how the radius of a kahar nucleus depends upon the mass number a to the power 1 by 3, a to the power minus 1 by 3, a to the power minus 3, a to the power plus 3. तले कौन होगा ना a to the power 1 by 3 by a to the power minus 3 लिखी परिबा हैला. तले this is the most important relation of the kahara the r, that is the radius of a nucleus with the mass number. तले हमें कौन जाने से जेतु mass number is different for different nuclei तेनो r is different for different nuclei हैला. The smaller nuclei has smaller radius and bigger nuclei has bigger nucleus हैला. तल जो nuclei मानकर atomic number जते अधिक तार radius टा कोन हबो सेते अधिक तेनो r is directly proportional to a to the power 1 by 3. The next the size एति की हला तल what is the volume, then third aspect हला volume, third characteristic हला volume. Then what is the volume of the nucleus? The volume of the nucleus, the nucleus in a spherical in shape, then our volume कहते ना volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Clear? तले volume है लगते 4 by 3 pi r cube. This now put the values. Then what we get 4 by 3 pi r, that is equal to r0 into a to the power 1 by 3 to the power cube. Then this is equal to 4 by 3 then pi है लगते r0 cube into a to the power 1 by cube, that is equal to a. Clear? ताले वॉल्यूम इज इक्वल टू कितने पहले 4 by 3 pi r0 into a हैला. तो देयर इज अ रिलेशन देखो अगेन देयर इज अ रिलेशन
the volume and A. তাহলে volume তাহলে V is directly proportional to A. ହେଲା তো remember that this and this. তাহলে R is inversely R is proportional to A to the power 1/3, but you can তাহলে এটি R is V is proportional to A. এটা হলো V R is proportional to A to the power 1/3. এটা হয়ে গেল V is proportional to A. ହେଲା তাহলে greater the mass atomic number greater the mass number, the more is the volume of the nucleus. Clear? তাহলে nucleus is directly proportional to কাହା ସହିତ the mass number of the nucleus. Clear? तो next time देखिवा density. ହେଲା तो what is the density? तो density पूर्वରୁ ଆମେ ଦେଖିବା what is the mass of the nucleus. ତାହେଲେ what is the mass of the nucleus? ତାହେଲେ mass তাহলে न्यूक्लियस ভিতরে রহিলা কে তো न्यूक्लियस ভিতরে न्यूक्लियंस आ ভিতরে রহিলা কে না न्यूक्लियंस हैला तो न्यूक्लियंस के ना दैट इज द Z प्लस N दैट इज कॉल्ड के A. the total number of nucleons है number of protons and number of neutrons है तो as the number of protons mass of a proton is nearly equal to mass of a neutron and mass of proton तले as mass of proton is nearly equal to the mass of a neutron तल that implies the mass of a nucleus is proportional to तल केते गला तले गोटे प्रोटॉन ला मास हला केते mp तले how many number जेहेतु all are in suppose कौन कहले mass of proton is equal to mass of neutrons तले total mass केते लिखबे total mass is equal to हमें कौन लिखिबा sum of कहरो mass of a proton plus summation of a mass of a neutron तले summation of a mass of proton एडी केते अछि ना Z एडी केते अछि N तले जेहेतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ला मास पाखापाखि समान तले वी कैन राइट तले कौन लिखबा तले एटा लागेते नाले Z into mass of a proton plus N into mass of a neutron तले that is equal to Z एटा केते गेला तले mp plus जेहेतु mass of a neutron is nearly equal to mass of proton we can write तले mass of a proton तले that is equal to Z plus N into कहते हैं mp तल Z plus N is equal to A तल A into mp. Clear? तल this is the mass of a nucleus. तल mass of nucleus is nearly पाखापाखि nearly equal to कहते हैं A into mp. तल mass बाहर लाते की and volume बाहर लाते की. तल what is the density? तल वर्तमान देखिए the density. तल density of nucleus. तल what is the density of nucleus? तल density of nucleus. डेंसिटी हैला ताले डेंसिटी कोन होबा ताले डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ताले डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू कते गेला मास बाय वॉल्यूम बट व्हाट इज द मास है mp into a ताले मास ऑफ अ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ ताले डिवाइडेड बाय एटी कते वाला दैट इज इक्वल टू 4/3 pi r3 into a हैला तले डेंसिटी वाला केते मास बाय वॉल्यूम तले मास वाला mp into a वॉल्यूम वाला केते 4/3 pi r3 into a then this is cancel out तले this is equal to तले mass of a proton divided by 4/3 into pi r0 र q हैला तले एटी बर्तन देखो एटा r0 र q तले बर्तन एटी देखो तले the density of a nucleus the most important एटा काउंसिल क्वेश्चन लासे so that the density of a nucleus is independent of the kahara mass number this is the council question हैला तले density is independent of a mass number देखो तले mass हला केते mp into a वॉल्यूम केते गला ना 4/3 pi r into a cancel out this is the independent of a तले density is independent हैला the density is independent of kahara na mass number the most important the density is independent of a so that the density of the nucleus is independent of a हैला तले में कोन पहले rho is independent जदि rho is independent of mass number जदि rho mass number ऊपर निर्भर करे नहीं तले में कोन कहले तले density of all density हैला of density of all nuclei are same हैला so this is the most important thing the density of all nuclei are same
तो जते न्यूक्लिय मानेकर सपोज वी कंसीडर द डेंसिटी ऑफ कहार हाइड्रोजन एंड द डेंसिटी ऑफ सपोज आयरन हला गोटे हला डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ आयरन कहार डेंसिटी अधिका ना बोथ आर सेम ताले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन न्यूक्लियस रा डेंसिटी जहा एवं आयरन न्यूक्लियस रा डेंसिटी मध्ये सेया काहे कि ना डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स हला ताले डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज सेम टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ iron hela this is the most important council question so that the density is independent of kaharo the mass number but the density is a constant dekha mp is a constant the mass of proton 4/3 is a constant pi is a constant r0 is a constant so this is also a constant hela তাহলে এটা হলো কোন কনস্ট্যান্ট the density of all nuclei are constant তাহলে কনস্ট্যান্টটা কত what is the value of density the density of all nuclei যদি আমি দেখিবা তাহলে এটা কেতে গেলা mass of proton yes put the mass of proton 1.66 into 10 to the power minus 27 divided by 4/3 then pi that is called 3.14 into r0 kete na 1.2 into 10 to the power minus 15 to the power whole cube so if we substitute all these values then we get যদি আমি দেখিবা then this is the value order of 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube clear so this is the density of all nuclei हैला तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस रा डेंसिटी केते ना 2.3 into 10 to the power 7 kg per meter cube आयरन न्यूक्लियस रा डेंसिटी केते ना सही 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube तो all the nuclei have same density clear and the density order kete dekho order of the density lagete 10 to the power 17 it is the very high so why the density of a nucleus is very high the karan because the atom size is large but the r size kete ache the nucleus size is very small तेणु सही वॉल्यूम इज वेरी हला तले आम कौन कहले मास बाय वॉल्यूम तले जेहेतु से डेंसिटी इज वेरी लार्ज कौन इन केस ऑफ जेहेतु दिस इज द टोटल एटा लगे मास टोटल एटम ये बर्तमान ऑलमोस्ट वॉल्यूम ये न्यूक्लियस कंटेन्स कौन ऑलमोस्ट ऑल द मास है तेणु ये आम कौन पाइले द डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लिय are same and it is the order of 17 जदि कहा जाए what is the order of the density that is the 17 it is the very high clear